Good morning students. Today I will explain you about the capital of new partner and capital of old partner. Sometimes in the question it is given that when a new partner comes into the partnership firm, all the old partner adjust their capital according to the new partner's capital, or it is given all partner adjust their capital according to new ratio. If both were same, and you will apply the following process in that case कि whenever in the question it is given कि पुराने साझेदारों की कैपिटल को नए रेशो में कर दिया जाए या पुराने साझेदारों की कैपिटल को नए पार्टनर के रेशो में कर दिया जाए, इन सब कंडीशन में आपको एक ही प्रोसेस अप्लाई करना है। और वो प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट यू विल बी कैलकुलेट द न्यू रेशो एंड देन divide the all entire capital of a new partner's capital into the all partners. Suppose that in the question it is given the adjustment of capital. Okay, the first point, adjust the old partner's capital in new ratio, or adjust the old partner's capital in new partner's capital. The both are the same and you will be calculate in the process same concept. Okay, so suppose that in the question it is given the old partner were X and Y and their capital was 20,000 rupees and 30,000 rupees. New partner's capital 25,000 rupees for 1/4 of ratio. Is that clear? Old ratio is 3:2 and in the question it is given calculate the new capital of old partners. Is that clear? Or it is given calculate the new partner's capital in new ratio, sorry, old partner's capital in new ratio, or adjust the old partner's capital in new ratio. कोई भी पॉइंट कहा जाए आपकी कंसेप्ट एक ही है और आप उसको एक ही कंडीशन से करेंगे कि फर्स्ट यू विल बी कैलकुलेट द न्यू रेशो. इन दैट केस कि व्हेनेवर नथिंग गिवन अबाउट द न्यू रेशो, देन फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द न्यू रेशो बाय द फॉलोइंग कंडीशन कि न्यू रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशो इनटू ओल्ड पार्टनर रेशियो. ओके, ये आपका पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, ये आप फिर क्लियर कर रहा हूँ कि वेन एवर दिस टाइप्स ऑफ कंसेप्ट इज गिवन कि कैलकुलेट न्यू रेशियो, यू विल अप्लाई द फर्स्ट वे एक्स 1 माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3/4 इंटू 3/5 3/5. ओके, दैट इज 9/20. देन वाई 1 minus 1/4 is equal to 3/4 into 2/5 is equal to 6/20. The new ratio is 9/20, 6/20 and 1/4, and you will be verify your ratio is correct or ratio is not correct. Okay, so you will apply the 20 to 9, 6 and 5. This is ratio 20/20. It means this your ratio is right. Your new ratio is 965. Is that clear? Now, according to the new partner, 1/4 ratio कैपिटल इज कितनी आपकी है 25,000 रुपीज, यानी आपकी 1/4 की कैपिटल कितनी है 25,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? और टोटल कैपिटल विल बी टोटल कैपिटल विल बी 25,000 इंटू 4/1. ओके, it will be 1 lakh rupees. Now these 1 lakh rupees will be divided into the new ratio and calculate the new capital of the old partner. Or it is X 1 lakh rupees into 9/20, Y 1 lakh rupees into 6/20. Okay, so it will be 005 45,000 rupees, 5 30,000 rupees, and new partner is 25,000. और आपके ये टोटल का
जो आएगा टोटल वो भी आपका इक्वल 1000 लाख ही आएगा। कितना कि 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द कंसेप्ट कि व्हेन in the question it is given calculate new partners capital, sorry, old partners capital in new ratio or old partners capital in new partners capital ratio, everything, nothing, anything is given about this topic कि you will be adjust the capital of old partner in new concept, you will be apply the following process कि first you will be calculate new ratio and then this capital of the old new partner will be divided into the new ratio. In this case, first you will calculate new ratio and then you will calculate the total capital of the firm according to the new partner's capital and then divided into the new ratio. Is that clear? That is the concept of capital adjustment. एक बार आप इसको देख लें।